वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code MPSE-1, India and the World. Answer any 5 questions in about 500 words each. Attempt at least 2 questions from each section. Each question carries 20 marks. So these are few instructions to be followed. Let's start discussing section 1. What are the major issues between the India-China relations? Explain. India-China relation के बीच क्या major issue रहे उन्हें explain करना है. Let's discuss the answer. The border issue and the states of Kashmir were the main cause जिन्होंने turn किया इंडिया और चाइना के initial friendship को. They forgot the principles that they agreed upon in the Panchsheel agreement. वो भूल गए about the Bandung conference which they had bilateral ties which was organized for Afro-Asian countries. जो आज तक remain रहा was only bitterness. China suddenly started up the border issue and they refused to agree with India that a border agreement exists होता है at all between India and China. Till date, any visa request to China from Kashmir is considered but वो stapled रहती है with a passport which is not accepted by the Indian government. Usually, visas are pasted to the passport otherwise it is not legal. It means that Kashmiri travel नहीं कर सकते China because it is disputed territory. Secondly, China support करती है principle of self-determination को कश्मीर में. They also started building roads in Aksai Chin area in Kashmir and to top it all the border was between Indo-China wiped away and the leftover relationship. Moving on to the next. What do you understand by the term Nehruvian consensus? Explain. Let's discuss the answer. Non-alignments main ingredient रहे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे. ड्यूरिंग द 50s एंड 60s नॉन अलाइनमेंट मेन इशू रहा जिसने ऑक्यूपाई किया फॉरेन पॉलिसी में एक जगह को एंड इट हैड द एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीबडी. There was an opinion that there should be more concentration for India's security, and Chinese aggression of 1962 ignited this change. Second ambition था of India का to be a superpower जिसने बनाया non-alignment को to take a back seat. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज भी कंटिन्यू इंक्लूड करती है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को along with various other issues. इंडिया की फ्रीडम फाइट और गांधी के इंडियन नेशनल मूवमेंट मेन रीजंस रहे बिहाइंड नेहरूवियन कंसेंसस. नेहरू ने कंबाइन किया टुगेदर हिज व्यूज और आइडियोलॉजीज को ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल विद गांधीयन आइडियल्स और नेशनल मूवमेंट टू फॉर्म नेहरूवियन कंसेंसस. इंडिया ने फॉट किया कंट्री के फ्रीडम के लिए इंक्लूडिंग इट्स कल्चरल फ्रीडम. The Nehruvian policies आज भी continue होती हैं to be relevant. Today the need of our is skillful diplomacy and not the application of military power. Diplomacy help करती है हमें achieve करने में better relationships अपने neighboring countries के साथ. There is another viewpoint which is contrary to the Nehruvian policies. Nehruvian policies के view के अनुसार policies outdated रही आज के scenario में and the non-alignment movement की कोई significance नहीं थी. Historians who have analyzed Indian history ने feel किया contribution को नेहरू के had been significant in Indian foreign policy. नेहरू की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी of international events और उनके इफेक्ट उन इवेंट्स पर रहे जो कि इंडिया पर रहे. Though he was the prime minister, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर थे बट वो पर्सनली इन्वॉल्व रहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग पर. Moving on to section 2. Write a short note on each part of the following questions in about 250 words. Let's start discussing part A. SARRC. Let's discuss the answer. It was in the end of 1970 Bangladesh President Ziaur Rahman with the sole aim of setting up a regional economic organization visited all the South Asian country. A working paper on region population और उसकी related details सेंड की गई फ्रॉम बांग्लादेश गवर्नमेंट सारे साउथ एशियन कंट्रीज को. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेट हुए अकॉर्डिंग टू द साउथ एशियन कंट्री जिन्होंने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को. प्रपोजल कंसंट्रेटेड एज अ बायलैटरल प्रॉब्लम्स and all the ways to solve for it.
प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने एम्फसाइज किया ऑन द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म एटसेट्रा। द डिक्लेरेशन मोस्टली इंक्लूड किया ओपिनियन और कंसर्न्स को फॉरेन मिनिस्टर्स के। द डिक्लेरेशन स्टक रही टू द इनिशियल प्रपोजल ऑफ बांग्लादेश एंड डिड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय साउथ एशिया ऑन रीजनल बेसिस। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज वर नॉट डिस्कस्ड। डिक्लेरेशन इक्वालिटी, इंटेग्रिटी, म्यूचुअल बेनिफिट एटसेट्रा पर बेस्ड रहे। The Dhaka summit was successful and stayed away from the deliberations. It was a conscious effort to make SAARC a success and uncontroversial because वो चाहते थे to starting note to be good. The second summit जो बैंगलोर में हुई, जहां पर decide हुआ to have a secretariat in Nepal's capitalist. देयर वर पॉलिटिकल इश्यूज और श्रीलंका ने विटनेस की ग्रेट प्रॉब्लम्स को नॉर्थर्न रीजन में, जहां पे तमिल्स को डोमिनेट किया। SAARC समिट जो होस्ट की गई ढाका के द्वारा, who host the first time too. Moving on to the next part, BIMSTEC. Let's discuss the answer. Two Southeast Asian countries जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड and three South Asian countries like India, Bangladesh and Sri Lanka ने फॉर्म किया BIMSTEC। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस ग्रुप का वो रहा इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एटसेट्रा। इन प्रपोजल्स के साथ साथ they were considered Asian highway links, Asian railway network, and a natural gas pipeline grid in the Bay of Bengal. Chamber of Commerce and Industry form hua and annual meetings which were conducted in BIMSTEC. बहुत सारे इकोनॉमिक कॉपरेशन मेजर्स लिए गए और सुपरवाइज किए गए बाय इकोनॉमिक एंड ट्रेड मिनिस्टर्स के द्वारा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरल डॉक्ट्रिन। लेट्स डिस्कस द आंसर। गुजरल डॉक्ट्रिन रेफर करता है पॉलिसी पार्टिसिपल्स को आर्टिकुलेटेड बाय आई के गुजराल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर इन द 1990s। इस डॉक्ट्रिन ने एम्फसाइज किया इंडिया की नीड को टू फॉस्टर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशन अपने नेबर्स के साथ, particularly in the South Asia, without expecting reciprocal action. Gujarat's की अप्रोच sought to reduce करी टेंशंस को इन द रीजन और एनहांस किया इंडिया के रोल को एज स्टेबलाइजिंग फोर्सेस। पांच की प्रिंसिपल्स जो गुजराल डॉक्ट्रिन ने इंक्लूड किए, दीज आर नॉन रेसिप्रोसिटी, नॉन इंटरफेरेंस, बायलैटरलिज्म, peaceful coexistence and mutual security. Moving on to the next part, river disputes. Let's discuss the answer. River disputes often arrive होती हैं from the shared use of transboundary rivers, जहां पर upstream और downstream country for control over water resources के लिए रहती है। इन disputes को especially pressing हुई regions में जहां पर water critical है और often scarce resource है। South Asia में river disputes have been a long source of tension among the countries जैसे कि India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and China. One of the most well-known river disputes in the India is the Indus Waters Treaty between India and Pakistan. China constructions of dam on the upper reaches of Brahmaputra river ने also create किया concern को दोनों ही countries India और बांग्लादेश के बीच में, जिसने fear को reduce किया water flow downstream के। Moving on to the next question, part A, India-Pakistan relations. Let's discuss the answer. Partition of India happen हुआ 1947 में और इसने पाकिस्तान के birth को lead किया। Partition happen हुआ क्योंकि group और part of the country ने सोचा इस्लाम को is one of the unities with the people, जो कि against the nation's policy के, which thought that the main aim was to fight against colonization. इंडिया और पाकिस्तान हमेशा influence रहे तीन बड़े मेन इश्यूज से, which were namely the difference in world views, the Kashmir issue and the nuclear issue. वर्ल्ड व्यूज डिस्कस करें, इंडिया और पाकिस्तान ने परसीव किया वर्ल्ड को डिफरेंटली और काफी डिफरेंट ओपिनियंस के साथ और अलग अलग पॉलिसीज के साथ। Manifestation of the conflict Kashmir.
व्हेन इट कम्स टू कश्मीर इशू, जब कश्मीर के इशू की बात आती है, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग ऑपोजिट पोल्स की तरीके से एक्ट करते हैं। पाकिस्तान कंसिडर करता है बिकॉज ऑफ दिस इशू दोनों इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग रहते हैं। कश्मीर वॉज गिवन टू द लाइबर्टी टू चूज ईदर पाकिस्तान और इंडिया व्हेन दे सेपरेटेड। हैदराबाद एंड जगन्नाथ डिड नॉट मर्ज एज पर द विशेस ऑफ हिंदू पॉपुलेशन विशेस। ये डिसाइड किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट की आसानी से, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेंट थी। लेकिन कश्मीर के केस में लद्दाख रीजन का मेजोरिटी रहा बुद्धिस्ट का, कश्मीर वैली ने मुस्लिम्स को, और जम्मू हैड हिंदूज एज मेजोरिटी। India wanted Kashmir issue to be stopped with the LOC, and Shimla Agreement succeeded in creating a new method of negotiating the issue. ये understood रहा कि agreement को इस तरीके से frame किया गया that in future LOC को convert किया जा सके boundary में। लेकिन ये कश्मीर के इशू का एंड नहीं था। ड्यूरिंग 1980 मेजर प्रॉब्लम्स इनगल्फ हुए कश्मीर में, जो कि ग्लोबल इस्लामिक रिजर्जेंस द फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स ने मशरूम किया, विच वाज अ मेजर थ्रेट टू इंडिया एंड द यूएस। पाकिस्तान was in comfortable position. मूविंग ऑन टू न्यूक्लियर इक्वेशन, पाकिस्तान और इंडिया ने सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया 1998 में और अपने एक्शन को जस्टिफाई किया। इंडिया ऑल्सो जस्टिफाइड दैट देयर वाज ऑलवेज अ सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। ये इसलिए था क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस विद इन द कंट्री ने लीड किया न्यूक्लियर टेस्टिंग को ऑफ बोथ द कंट्रीज। Dialogue. There is a need for bilateral talk or dialogue between the countries to sort out various issues. Border fought किया गया between two countries जिन्होंने wave पे किया agreement के लिए. But an exclusive bilateral talk हुई between the Prime Minister. It was during this time the Delhi-Lahore bus service was planned. Moving on to the next part. इंडिया-नेपाल रिलेशंस, लेट्स डिस्कस द आंसर। इंडिया की काफी एफिनिटी रही टुवर्ड्स नेपाल बहुत सारी वजहों की वजह से। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो लाई करती है बिटवीन इंडिया और चाइना, और मोर ओवर ये इजीली अप्रोचेबल है इंडिया से। बुद्धा नेपाल में बॉर्न हुए एंड इट वाज ओनली हिंदू किंगडम जो का जिसका कल्चर बहुत क्लोज कनेक्शंस रखता है इंडिया के साथ। इंडिया और नेपाल का अच्छा सपोर्ट रहा एंड हैव साइन टू ट्रीटीज। फर्स्ट वन इज द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसने इंश्योर किया इंडिया कोऑपरेटेड को इन सपोर्टिंग नेपाल इफ देयर इज एनी थ्रेट फ्रॉम चाइना। नेपाल चाहता था इंडिया को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट चाइना से। द सेकेंड ट्रीटी वॉज द ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसने हेल्प किया ट्रेड और ट्रैवल को एनहांस करने में। दिस वॉज नेवर रिव्यूड एंड वॉज सब्जेक्टेड टू राइट ऑफ ट्रांजिट। नेपाल का एक्शन टाई करता है अदर कंट्रीज के साथ, ग्रेटली अफेक्ट किया इंडिया को। Of late, Nepal and China are getting along well. Nepal outsourced raha Chinese companies में to build their infrastructure, और they also purchased arms from China. Nepal always look up करता है इंडिया पर for its economic growth by enhancing trade and economic relationship इंडिया के साथ। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.